join the call. I don't know. They're not able to. Or... Oh, well, hi. Yeah, lovely. There Hi. you are. There we go. Finally. All right. So Finally. let's give a quick introduction of yourself, right? Like this is Vikas, guys. So he's a cybersecurity expert. All right. I'll just give an opportunity for you to just go through this. Yeah, so let's make like keep it pretty Yeah. quick. So I work in the field of cybersecurity. I am based out of the Netherlands at this point in time, and yeah, I'm just trying to create awareness, around this topic of cybersecurity. So I also have a Insta handle called Cyber Bharat because I feel it's really important in India, especially that we are aware of the dangers we have in cybersecurity. Right. All right, that's pretty cool. Like, first of all, whenever we talk about cybersecurity, and people get that dilemma of having the hoodies, and they get that hacker kind of a feel. Looking at the movies, especially, right? Yeah, In but the movies, it's portrayed like that. So, what is your but opinion on that? Yeah. but I'll just switch to Hindi because I think that would be easier for the audience, right? Um, Right, right. I think it's only in movies that whenever you see कि कोई hoodie पहन के आ गया तो वो cyber security में otherwise it's just like any software engineering job and it's amazing to be honest if you like it but अगर आपको ये पसंद नहीं है तो it can be pretty boring. Okay. So, what is a day like in a cyber security expert? A lot of meetings or Okay. and it's so साइबर सिक्योरिटी ना सबके लिए अलग होती है जैसे हाँ, एक इंडिविजुअल के लिए साइबर सिक्योरिटी अलग है राइट right, एज एन इंडिविजुअल यू विल मोस्टली फोकस ऑन कि मैं अपने अकाउंट को कैसे सिक्योर रखूं मैं अपने डेटा को कैसे सेव रखूं बट अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए साइबर सिक्योरिटी दूसरा होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए है कि मैं अपने कस्टमर्स के डेटा को कैसे सेफ सेफ रखूंगा मैं अपने कस्टमर्स को कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करूंगा कि वो मेरे सिस्टम पे आके या मेरे वेबसाइट पे आके ही डजंट लूज हिज इंफॉर्मेशन जैसे कि लास्ट ईयर बोट हम right. सबको जानते हैं बोट a lot of data leaks are happening so in India every week there is a data leak वजीर एक्स इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि मतलब साइबर सिक्योरिटी क्या कर सकता है बिकॉज वजीर एक्स इज ऑल्सो सोशलाइजिंग द लॉस कि अगर मान लो Mm-hmm. आपका अकाउंट हैक नहीं भी हुआ है still you have to pay for the hack you have to pay for the loss which the company has occurred so so that's a huge thing right let's say if I'm an investor in Wazir X और अगर मैं Right. कुछ क्रिप्टो होल्ड करता हूँ and then I'm losing 40% of my value because कंपनी ने कुछ अच्छे से नहीं किया so that's the impact of cybersecurity these days और ये as individuals हमें जानने की बहुत ज़रूरत है and now if I come to the government level तो Mm-hmm. उनका cyber security अलग है it's more on the cyber warfare and stuff like that Correct. जो awareness नहीं है so Mm-hmm. सबके लिए cyber security अलग है. different है. Right. Got it. Got it. That's pretty interesting. ऑलराइट तो बहुत लोगों को ये जानने का मतलब शौक है कि लॉट ऑफ पीपल राइट व्हेन दे आर यंगस्टर्स एंड ऑल मैंने बहुत सुना है ये हैकिंग बहुत कूल होती है एंड ऑल दिस स्टफ एंड हाउ समवन कैन बिकम अ हैकर तो दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन कि मतलब सबके अंदर होता है कि मुझे हैकर बनना है मुझे हैकर बनना है तो कहाँ से शुरू होता है ये जर्नी फर्स्ट ऑफ ऑल हैकर कुछ होता नहीं है इट्स अ जॉब राइट और खाली आप हैकिंग नहीं करते हैं बहुत सारी अलग चीज़ें करते हैं तो इट स्टार्ट्स विथ योर बेसिक एजुकेशन राइट आप पहले अपना बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करें एंड देन आप साइबर सिक्योरिटी के कुछ कोर्सेज करें बिकॉज साइबर सिक्योरिटी में हैकिंग ही नहीं होती है देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट एरियाज राइट बिकॉज हैकिंग में भी आप वाइट हैट हैकर्स होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं हैकर्स होते ग्रे हैं हैट होते हैं बहुत सारे डिफरेंट होते हैं जैसे कि आपका डिफरेंट डोमेन्स होते हैं एक आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट बोल के एक डोमेन होता है जिसमें कि आप आइडेंटिटीज के बारे में बात करते हैं ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन मैं बहुत ही बेसिक लेवल की बात कर रहा हूँ आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज अ पार्ट ऑफ आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट राइट फिर यस सॉक मॉनिटरिंग होती है दैट जस्ट इज योर डिटेक्टिव सॉरी टू इंटरप्ट टेक्नोलॉजीज सॉरी टू या इंटरप्ट बट व्हाट इज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑडियंस के लिए अभी बहुत टू जरूरी टू है सेट करना हाँ टू तो फैक्टर आप बता दो थोड़ा ऑथेंटिकेशन टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बहुत सिंपल है जैसे कि आपने अपना पासवर्ड यूज करा और राइट पासवर्ड यूज करने के बाद आप कोई भी दूसरा फैक्टर जैसे कि हम ओटीपी देखते हैं राइट जो कि बहुत सिक्योर नहीं होता है बट हम यूज करते हैं या ऑथेंटिकेटर ऐप आप यूज करते हैं
करेक्ट। So that's also a way of using two factor. Two factor का मतलब है कि आप अपने आप को दो बार authenticate ऑथेंटिकेट कर रहे हैं. कर रहे हो, करेक्ट। So एक बार एक जो information आपके पास है, so what we say is the information you know and what you are. जैसे कि आप अगर biometrics use करते हैं, so that is something that you are, right? That you're using your Face ID, you're using your thumb impressions. फिंगरप्रिंट। So that's something that we call two-factor authentication. गॉट इट, गॉट इट। So that is very important for people to have these days for all the And Gmail IDs and stuff like what that, I I think. would request everyone to please enable your two-factor authentications. Hmm. Sab koi, like all the big companies, they give you uh, this as a way to enable it. Google has it, Instagram has it. In fact, आप कोई भी बड़ी TikTok has it. So अगर आप आज के टाइम पे every big organization, every big social media, they have this feature. Right. It's just like you have to go ahead and enable it. And एक और चीज, विकास, आई जस्ट वांट द ऑडियंस टू नो अबाउट दिस। ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं बट सबको नहीं पता होती ये चीजें, राइट? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एंड टू एंड एनक्रिप्शन इन हाँ, I व्हाट्सएप think चैट्स एंड I ऑल। think सबको पता होती है. It's just like हमें लगता है कि यार क्या ही हो जाएगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता. So because राइट। I would be really surprised या। अगर एक सिटी में रहने वाला लड़का या लड़की जो सोशल मीडिया पे आता है, उसको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में नहीं पता है या उसने नहीं सुना है. आई थिंक जो माइंडसेट होता है कि ये मेरे साथ नहीं होगा, या we always say don't post too much on social media. Post करो, but you should understand the risk. But then it feels like कि uh, कौन सा मैं शाहरुख खान हूँ, मेरे साथ क्या हो जाएगा, right? So but there is something called data aggregation, right? जो different hacks या। होते हैं उसमें आपकी छोटी छोटी डेटास, जो डेटा सेट्स होते हैं ना, वो आप you lose. And then the hackers, what they do, they can sit together and they basically create a chain of information about you and then start targeting you. So data aggregation, I also made a video on my channel around the risks of data aggregation. So राइट। uh, this is like, it feels very innocuous कि यार ये तो harmful है ही नहीं. कोई मेरा नाम लेके मेरा date of birth लेके क्या ही कर लेगा. But from one hack he's getting your date of birth, but from the other hack he's getting your credit card information. So बहुत कुछ हो सकता है. अच्छा, okay. That is scary actually. Okay, in this generation of artificial intelligence, right, जहाँ पे voice clone हो रही है, and is it safe to keep your pictures publicly visible, like your Instagram profile to be public at least? Depends. So, Of course, it's not safe, right? yeah, If you are on public domain, right. anyone can use your picture. But again, where do you want to draw the line, right? If you're comfortable, it's fine. It's just like you have to be aware, right? We hear that आजकल हाउस अरेस्ट, जो जिसको कहते हैं हम लोग डिजिटल हाउस अरेस्ट, कि आपको Mm-hmm. फोन आता है कि आपके बेटे को हमने अरेस्ट कर लिया है, हम पुलिस बोल रहे हैं, एंड देन somebody is cloning the voice of your son or your daughter, right? Mm-hmm. Uh, Mm-hmm. but to make your parents aware कि आजकल की दुनिया में ऐसी चीजें होती हैं, so whenever to double check, to vet, that's the mindset that everyone has to uh, understand and learn. We in cybersecurity we say that trust but verify. Mm-hmm. Got it. And another question of mine, this is again a very basic question. I'm sure audience want to know this as well. ये जो एंटीवायरस आते हैं मोबाइल के लिए या पीसी के लिए, बहुत बहुत यहाँ पे rumor है कि they are the ones to send you viruses sometimes and buy their premium subscriptions, right? Something like that. So how true is Yeah, that? but it is rumors, right? This is something which I cannot confirm or deny, right? But I have also read about all Mm-hmm. these things. Like Right. that Kaspersky, I Correct. think it was Kaspersky, that was US government stopped Kaspersky in the US Mm-hmm. because Russian threat actors थे उसके अंदर. So yeah, I have just read about it, so I cannot say, right, कि ये company क्या करती है. In Right. fact, there is a US company called KnowBe4, and उनका काम Mm-hmm. है to create awareness around cybersecurity. And उनकी खुद की company में they hired a North Korean guy who was Mm-hmm. acting as a hacker. So Oh. these things
So a cybersecurity company got social engineered by a North Korean hacker. So it's not like if you are working in cybersecurity that you are completely safe, or if you are a cybersecurity company, you are completely safe. We have seen in the past cybersecurity companies getting breached. Mm-hmm. Oh, So weird. it's so it's just like, but you have to get into that mindset of learning. Right. You have to get into the mindset of taking this subject seriously because कल को ये अगर आज आपको affect नहीं कर रहा है कल आपको ये affect करेगा. So whenever you post a picture, just think कि is it necessary? Should I? And if you are fine, if you are comfortable, it's okay. Mm-hmm. But just take things seriously. पासवर्ड को पासवर्ड ना रखें. बहुत So बहुत password बेसिक वन टू चीज थ्री है. ना रखो. हाँ, बहुत बेसिक चीज तो है. आप पासवर्ड को पासवर्ड क्या ना सजेस्ट रखें. करते हो? पासवर्ड कैसा होना चाहिए? How difficult it should be and what are the things? What are the I measures think you need to take? Mm-hmm. password can be you don't have to make it difficult, right? You can use password managers. आजकल के टाइम पे तो if you are using Microsoft Authenticator app और Google Authenticator जो कि फ्री है उसमें आप पासवर्ड सेव कर सकते हैं अपने फोन पे. So you don't have to it's not rocket science, But it's just but there is discipline. again but there is again one thing that if you get your app deleted, right? The authenticator app No, deleted. but I think The, these are now cloud sync. So now अच्छा. it's not like कि आपके फोन पे अगर वो delete हो गया तो नहीं मिलेगा. You can have it on your different phone because it's synced to your cloud and Mm-hmm. your account. So whenever you log in with let's say zaid@gmail.com आपको वो फिर वापस आ जाएगा. Got it. So That's pretty cool. it's just discipline, right? It's just like brushing your teeth twice a day. कितने लोग करते हैं? Got it. That's funny. All right. So next question of mine is देखो ऐसे बहुत सारे apps हैं, games हैं, बहुत लोग modded games download करते हैं, and they allow access to contacts. They allow access to lot of other things on their phones, right? जैसे कि मैंने बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप मॉडेड एप्लीकेशंस या क्रैक्ड वर्जन्स डाउनलोड करते हो या कोई भी नए एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हो जो स्टार्टअप्स के होते हैं, right? How safe is that? Is it safe to give access to your contacts list and they can easily get your contacts and stuff like I that? would say just see whether ask this question कि यार ये contact किसको क्यों चाहिए, right? Point. And in fact, if you're using an iPhone or if you are using an Android device, right? These days you can make sure that you can basically allow or switch it off. Like, okay, I don't want to share my contacts. I don't want to Correct. make sure that the audio is on for this app. Mm-hmm. So because in fact iOS has made it pretty transparent, right? It always says that, okay, this device is tracking your, Mm-hmm. this device is asking for microphone, or this device is asking for your gallery. बहुत Correct. तो आपके gallery के भी information. So ask yourself this question: Do I really need to provide this access? और खाली allow नहीं करना है. अपने आप को एक बार let's take educated decisions rather than Correct. allow कर सब करना, because of course if it doesn't need it you Mm-hmm. should not give it, Got it. like Makes sense. right, Yeah. because I enabled the microphone for Instagram Mm-hmm. now because I have to talk to you, otherwise my microphone was not enabled. So by default, it's not never even enabled. Like you keep it disabled Yeah, always. by default it's enabled. I keep it disabled. Acha. So whenever I am kind of, so now I have to do it because we are live right now. All right. There is also a rumor that Google actually collect your voice notes, and when you actually talk about buying a washing machine or a refrigerator, they actually display it on the screen, like the advertisements of those particular products. Yeah, but So how true is that, and how safe I, is it? to be honest, I can. It's again a rumor, right? I don't know Mm-hmm. because Google says that they take our privacy pretty seriously, and I've seen certain steps, right? We can Mm-hmm. switch it off, but it's not just one device that you turn off. So Mm-hmm. in your house, you have a Google speaker lying around, right? So right now I'm Correct. talking to you, my Android phone is here. Yeah. Uh, so it's not just one device. You have to make sure that every device is kind of disconnected in that way, right? So Got it. हमें लगता है कि हमने तो इसमें तो ऑफ कर दिया, बट इसको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रहा है? बट इट्स ऑल synced, right? If you have a Google speaker somewhere and you're talking about, let's say, diapers, if you're going to become a new dad, of Mm-hmm. course you will see things about diapers. Okay, makes sense. Got it.
All right, that's good to know. And second choice is I myself I'm a game developer, as you know. So we keep making games and all, right. We never take measures of security, especially when it comes to authentication, or giving them push notifications or whatever it is, like connecting to Firebase or something like that. But uh, some companies which are big, which are launching games, they do take, right. And this fact that people are not taking cybersecurity as a serious thing. What do you have to say on this? Like, do you Yeah, think but it's being taken serious, at least in India? I don't think so. And I can talk about everyone, the government, the industry, and also, you know, individuals, right? दूसरी Because चीज यार, मतलब गवर्नमेंट साइट्स जो है ना, ये कितने सेफ हैं? जैसे लास्ट वीक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यूट्यूब चैनल हैक हो गया था. सो आज करेक्ट, आज हमें पता है कि रणबीर अलाहाबादिया का यूट्यूब चैनल हैक हुआ आई है. वाज बट कमिंग टू दैट पॉइंट a lot of people they don't know that last week नाउ. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यूट्यूब चैनल हैक हुआ था. Oh, oh, oh. So How bad is so that? बट गवर्नमेंट चैनल्स हैक होना बहुत बड़ी बात नहीं है. बाहर भी होते हैं, Right. राइट. आउट आउट ऑफ इंडिया भी होते हैं, राइट. बिकॉज नोटोरियसली हमें पता है कि गवर्नमेंट चैनल दे डोंट पे अटेंशन. बट आई Mm-hmm. सी कि at least the government, they have they are working on it. Are we in the top 50? I don't think so. uh, चलो top 50 शायद हम I'm being a bit harsh, but top 20, because we are the fifth largest economy in the world, right. Right. अगर आप देखोगे तो हमारा साइबर सिक्योरिटी बजट समवेयर अराउंड 900 crores है, जहाँ पे Oh. कि and don't quote me on this, roundabout, Yeah, yeah. right. Because I made a video around this and I don't remember, Mm-hmm. right. जहाँ पे कि अमेरिका का $2.2 billion है. Whoa. So Huge. Yeah. we see, right. But again, it's it's different for different folks. So at least what I would request everyone um, watching it, to take their security seriously, right. Mm-hmm. Government कर रही है and धीरे धीरे वो करेगी, right. Because again, Got it. we have a lot of other issues to solve before this pops up. But if we want to be ahead of the game, we have to start looking at it right now. um, US has a data center, again it's a rumor, जहाँ पे कि वो सारे encrypted files रखती है, because आप अभी उसको unencrypt नहीं कर सकते, right. कि Mm-hmm. कल को अगर आपका, let's say, all the encryption technologies which we have right now, and Mm-hmm. we talk about quantum computing. So let's say if quantum computing is successful, at that point in time they can basically go ahead and unencrypt all the data they have collected till now to see what they figure out. So yeah, some countries are way ahead than what we are, but I think uh, we are taking measures. So hopefully, um, let's say how it turns out to be. There are a couple of sites which are run by the government of India, and they're quite good. एक site is CertIn. So it's a Okay. website, but basically CERT is an organization around incident response. If any of the government Mm-hmm. organizations are hit by a cyber attack, I would request all of you guys to go ahead and check that out. वो काफी अच्छे अच्छे informations को share करते हैं. Got it. तो एक और आप, बिफोर गेटिंग ऑन टू दिस लाइव सेशन, आई वेंट अक्रॉस योर प्रोफाइल एंड एक मैंने वीडियो देखा था जहाँ पे आपने कहा कि पासवर्ड को किसी एक वेबसाइट पर जा करके आपके चेक करो, मतलब आई हाँ. थिंक इट्स व्हाट्स So योर पॉइंट. या there is a website called Have I Been Pwned? या राइट. So if you don't know whether you have ever been hacked, or हाँ हाँ. sorry, not hacked, but your data, if you have ever हम्म. been a part of a data leak, जाके बस अपना email ID उस में डालें और अपना phone number डालें, and you will see all the data leaks जिसमें कि हम्म. आपका नाम था या आपका email ID या phone number था. So it's a very easy way to understand. And if you're still using the same password, please go ahead and change it. Also, I would really appreciate if others, they kind of go ahead and just have two email accounts, one for your हम्म. social media and one for your banking and financial transactions. गॉट इट, गॉट इट. सो दैट्स really helpful. वो मैं लिंक अटैच कर देता हूँ नेक्स्ट स्टोरी वोरी में. हाँ हाँ And हाँ. I'll probably share that video of yours. That is really helpful for the people to
actually get to know if their data has been leaked or something. Yeah, All right. I think it's we have all the information available. It's about awareness. Right, right. So yeah, that is there. True. And I think you got a meeting to catch up at 8:30 or something, Yes, right? so let's wrap up. Let's wrap up and just see if anyone has any question. भाई जो भी ये देख रहा है लाइव सेशन कुछ क्वेश्चन है तो यार डाल दो यहाँ पे जल्दी डालना. So we have a cyber security expert here. आपकी ये क्लास मेरा क्वेश्चन था ये बियर बाइसेप्स का जो यूट्यूब हैक हुआ. व्हाट डू यू थिंक व्हाट माइट हैव हैपेंड लाइक इज इट बिकॉज ऑफ मे बी जो अंदर के लोग होते हैं उन्होंने पासवर्ड वासवर्ड कुछ पता करके हाँ किया या मतलब ऐसे कुछ हुआ होगा बहुत कुछ हो क्योंकि सकता है, यूट्यूब का राइट? तो सो बहुत मुश्किल. हाँ. जनरली जैसे अभी मैंने एक वीडियो भी बनाया है, मैंने अपने चैनल पे डाला भी है ये वीडियो. राइट. इट्स So, of course, if you're not taking your security seriously, right? आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर अनेबल नहीं किया है तो बहुत ईजिली है. और जनरली बड़े कंपनीज में, राइट, इफ यू आर अ गेम डेवलपर, अगर आपका खुद का यूट्यूब चैनल है, then if you have a team, right, you also राइट. share passwords in your team. If you don't do it well, right, so it's just leak, right? कि या. कहीं किसी बंदे ने नोटपैड पे लिख के रख दिया है, एंड कहीं किसी ने इंटरनल हो सकता है. ऑल्सो सोशल इंजीनियरिंग हो सकता है कि यूट्यूब के साइड से कुछ गलत हो गया हो, कि राइट. यूट्यूब में मैंने कॉल किया, मैंने बोला कि मैं खुद बियर बाइसेप्स हूँ, आई कैन नॉट लॉग इन इनटू माय सिस्टम. उसने कुछ क्वेश्चंस पूछे, आई डिड सोशल इंजीनियरिंग अराउंड इट, एंड यूट्यूब हेल्प मी टू रीसेट द पासवर्ड, एंड देन आई टुक ओवर द होल अकाउंट. सो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट या, इफ वी स्टिक टू द बेसिक्स, आई थिंक गॉट इट. you should be okay. Uh, the most difficult part is discipline. Mm-hmm. When you say और discipline, what is it like maintaining all these main two-factor authentications and stuff like that? two-factor authentication, it's easy. It's, let's say, making sure that you are creating strong passwords. आपको Got लगेगा it. क्यों ही बनाना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, मैं बार बार भूल जाता हूँ, फिर रीसेट करना पड़ता है. बट देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक डोंट क्रिएट पासवर्ड्स फॉर एवरी वेबसाइट. देर इज in most of the websites these days, you get like login with Google, Mm-hmm. login with Facebook. Use those things. There you don't have to Correct. create passwords. And But anyways, सबको एक आदत होती. अच्छा, अब you got to go. I think you have two yeah, basic questions. I feel. which one? How to secure YouTube channel, and second is what are some basic cybersecurity practices every woman should take to follow. I mean, to protect herself online. So So the one thing, how to secure your YouTube channel, make sure that you have two-factor authentication on, make sure that your password is strong, and don't share your password with anyone, Perfect. right? And what about cybersecurity practices every woman should follow to protect herself? Be very clear around what you share on social media, Right. and never ever share your location details. Okay. So Well, location details से क्या हो सकता है मतलब. look, but ये basically female के लिए, right? That Right. never ever share Mm-hmm. your location details, because then it's easier for anyone to kind of figure out, Where you आपका stay, usual where would you locations do, के, where and you सब stay, कुछ पता चल जाए. where you Mm-hmm. work, right? So Right. and stay away from social media in terms of like strangers, talking to strangers and trusting them, right? Because social media can be yeah, very attractive, but at the same time it's pretty dangerous. So use your mind, use common sense. Common sense is a bit uncommon these days, but please use common sense. Makes sense. All right, But Vikas, I think, l- yeah, yeah, please go ahead. but yeah, I was just like, it was really nice catching up with you, Zeb. Maybe we should It do was it great more talking to you often. as well. And Yes. thanks, man. Thank you. Thank Cheers. you so much. Yeah. Thank you. Bye bye. Yeah. See you soon. Bye. Well, that was it, I think. चलो यार किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो. So in this, modern times, especially in the era of artificial intelligence, a lot of applications coming out. Uh, बहुत सारे applications रोज रोज लॉन्च हो रहे हैं, बहुत सारे startups आ रहे हैं. तो it has become very crucial for us to protect our identity in terms of it doesn't matter if it's a guy or a girl, but it's very important to protect your identity overall. आजकल voices भी clone हो रहे हैं. आप एक वेबसाइट है 11 labs करके, आप वहाँ पे जा सकते हो एंड आपकी वॉइस क्लोन कर सकते हो. एंड
आपकी आवाज में कोई भी बात कर सकता है. So that is really bad. Meanwhile, it's helpful if used in a proper way. So what should be done to go in cyber security field? Okay, so you have to finish your basics first, like you have to get into this networking and stuff like that. ये करते क्या थे? So he's a cyber security expert. He's working in Netherlands, right? And coming back to your question, Azra Fatima, what should be done to be a cyber security field? So there are a lot of courses. There is networking, and you also have to choose. There are different kind of hacking fields. Like there is white hat hacker, black hat hacker, and gray hat hacker. White hat hacker is someone who works for the cyber security and makes sure it's safe and secure. It was a very good session and quite informative too. And you guys should keep sharing such information in future as well. Thank you so much, guys. Thank you so much, Khushi Singh. Thanks for acknowledging that. All right, guys. So with this information, I will just close this session of today. I'll try to reconnect with Vikas whenever it's necessarily needed. But right now, I think all your questions have been solved. If there are any, I'll be here for 2 more minutes, I feel. तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो. साइबर देखो, जब बात आती है सीखने की, 3 महीने इज नॉट इनफ टू बी अ प्रोफेशनल. एटलीस्ट 3 महीने में कुछ नहीं होता. 3 महीने में आप बस बेसिक सीख सकते हो. साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने के लिए आपको ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, राइट? और किसी भी चीज की बेसिक्स को आप सीखोगे तो यू कैन नॉट बी दैट प्रोफेशनल इन दैट पर्टिकुलर थिंग, स्पेशली इन 3 मंथ्स. 3 मंथ्स तो बहुत कम है. तो 3 महीने में नहीं, बट या right. So is there any other question you guys might have? But yes, coming to your point again, 3 months तो नहीं, but हाँ, with consistency and hard work, 3 महीने में बहुत फर्क आ सकता है आपकी नॉलेज में. 3 महीने आप कंसिस्टेंसी के साथ सीखोगे तो you will be really professional in at some point, at least, आपको बेसिक नॉलेज मिल जाएगी उसकी, and you'll be able to crack small things and stuff like that. But there are a lot of course, 3 months के कोर्स होते हैं, but consistency is something which is important. आप दिन में कितना टाइम दे रहे हो वो मैटर करता है. 3 महीने तो मतलब yes, I'm answering your question. So 3 months are not enough. I don't know which language you prefer, English or Hindi. So 3 months are literally not enough, but definitely you can get onto some points. But also it matters that how much time you're willing to dedicate in a month, in a day, especially. तो बहुत मैटर करेगा. So I hope your question has been answered. If you have any other doubt, you can let me know. I have another minute. So I'll try to connect with Vikas again based on the request I might receive. तो फिर से साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को इस कॉल में लेना है तो हम ले सकते हैं, बट नॉट नाउ. ही गॉट अनदर मीटिंग टू अटेंड, तो ही हैड टू रश, बट डेफिनेटली वी कैन टेक हिम. आफ्टर इंजीनियरिंग व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप टू गो इनटू इट? ओके, तो आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली एंड आपको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना है, तो आप क्या करोगे? तो पहले आप नेटवर्किंग सीखोगे. नेटवर्किंग के बेसिक्स. नेटवर्किंग मतलब आईपी एड्रेसेस, ये हो गए, रूटर्स हो गए, हाउ टू सिक्योर योर रूटर्स एंड स्टफ लाइक दैट. तो बहुत सारी कोर्सेस हैं इसके नेटवर्किंग के. यू हैव टू बी अ नेटवर्क स्पेशलिस्ट फर्स्ट. तो ये एक कोर्स आता है नेटवर्क स्पेशलिस्ट का, ये आपको करना होगा. उसके बाद आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह पे फोकस करना है, डिक्रिप्शन सीखना है, हाउ टू एनकोड. इज साइबर सिक्योरिटी इज कोडिंग? हाँ, यस, इट रिक्वायर्स कोडिंग स्किल्स ऑफ कोर्स. साइबर सिक्योरिटी में कोडिंग की स्किल्स रिक्वायर्ड है, क्योंकि एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन सब बहुत होता है. एथिकल हैकिंग, सी हैकिंग व्हेन इट कम्स टू, बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन है कि हैकिंग हैकिंग इज डिक्रिप्टिंग. ठीक है, आप किसी चीज को ब्रेक कर रहे हो, किसी लूप को ब्रेक कर रहे हो, एंड यू आर गेटिंग इनटू सम सिस्टम और यू आर गेटिंग एक्सेस टू सम रूटर और समथिंग, देन दैट इज हैकिंग, राइट? एंड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स वो नहीं करते. उनकी जॉब ऐसी नहीं होती. उनकी जॉब में जस्ट लाइक अ नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनका भी काम होता है, उनको भी प्रोजेक्ट वाइज होता है. इफ दे आर लविंग इट, इट्स वेरी नाइस. इफ दे डोंट लाइक इट, देन इट्स प्रीटी बोरिंग. ये चीज आप, अभी जिसको मैंने इनवाइट किया था, विकास को, डू फॉलो हिम.
will have more knowledge on these aspects of cybersecurity. So yeah, I hope I answered your question. It's not about ethical hacking only. It's about providing securities to some systems. जैसे कि किसी ने एक ऐप बनाया, ऑथेंटिकेशन रखा, ठीक है, वो ऐप आपका नाम कलेक्ट कर रहा है, आपका पासवर्ड कलेक्ट कर रहा है, आपकी पिक्चर कलेक्ट कर रहा है, राइट? एंड हाउ सेफ योर पिक्चर, योर नेम, योर इंफॉर्मेशन इज विद दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन. सो दिस इज द क्वेश्चन. तो ये साइबर सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट है कि उसको सेफ गार्ड करके रखे. सो दीज आर द things which comes under cyber security. So hacking is another thing in it. So it's again a subdomain kind of a thing in it. All right, guys, we'll wrap this up. Thanks for joining, and maybe we'll have more such sessions, especially with Vikas and all. I'll keep inviting people to this kind of a live, and we'll definitely have more informative stuff discussing along the way. All right, bye. Have a good day ahead. Thank you.